Good morning, friends. Once again, welcome back in Social Science live class for Standard 8. As all of you knows that currently we all are discussing in our subject Geography, chapter number 4. Okay, so chapter number 4 that we are currently discussing is agriculture. Okay, so we have already started with the topic types of farming, and yesterday we have completed primitive subsistence agriculture. In primitive subsistence agriculture, we have first studied the general features of primitive subsistence agriculture. Then after we have started with the two types of farming which are considered under the primitive subsistence agriculture. In that one, yesterday we have completed about the shifting cultivation. ठीक है? So कल हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक तरीका कौन सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला कंप्लीट किया। ओके, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? साबरी धोटे, आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? साबरी, आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? ओके, गुड बेटा, है ना? So today we are first discussing about nomadic herding, and then we'll discuss about the commercial farming. Okay, so let us first discuss about nomadic herding. Okay, now what is nomadic herding? The most important thing is that in this means in nomadic herding, okay, herdsman move from one place to another. Okay, so in this type of herding, okay, what is there? Herdsman move from one place to another. Okay, along with their animals. Okay, so in this, herdsmen move from one place to another along with their animals. Okay, in search of fodder and water. Okay. Now, what does it means in nomadic herding or in this type of farming? Herdsman. Okay, आप जो खेती करेगा वो farmer, agriculturalist. Okay, so herdman means चरवाहे, जानवरों को चराने वाले. Getting the point of it? जो चरवाहे हैं, जानवरों को चराने वाले, है ना? वो क्या कर रहे हैं? They move from one place to another. एक स्थान से दूसरे स्थान रेगुलर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं. Along with their animals in search of fodder and water. ठीक है? तो कुल मिलाकर उनके पास जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें चराने के लिए, फीड करने के लिए. ओके, so what was required for the animal? Fodder, चारा चाहिए. ओके, और बड़ी संख्या में जानवर हैं, what they required? Water. Okay, they move from one place to another in search of
fodder and water along defined routes. Now along defined routes means what basically? कि this type of herding practice is being done by the different communities from many centuries. Okay, so in these hundreds or thousands of years, okay, their ancestors have, with their experience, okay, their ancestors have decided the different routes. ठीक है, so जो हजारों सालों से हर्ड्समैन और उनके पूर्वज क्या कर रहे हैं, ये सारा काम रेगुलरली कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ, लगातार वो लोग इस चीज का प्रयास करते रहते हैं कि ये सब चलता रहे. अब प्रयास मतलब कि उनका जो रूट है कि हमें इन 2 महीनों में किस इलाके में जाना है ताकि वहां पर हरियाली रहेगी, हमारे एनिमल्स के लिए फॉडर भी अवेलेबल होगा और साथ में क्या अवेलेबल होगा, वाटर. ठीक है, सो पूरे साल भर का उनका एक रूट और डेस्टिनेशन फिक्स होता है कि 2 महीने यहाँ रहना है, 2 महीने बाद उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां हरियाली आ जाएगी, 3 महीने बाद उधर चले जाएंगे तो वहां हरियाली आ जाएगी. ओके, सो दैट एंटायर रूट हैज बीन फिक्स. वो जो पूरा रूट है, रास्ता है, वो उनका कैसा है, फिक्स है. Got it? So that is what they had. Okay, so in nomadic herding, herdsmen move from one place to another along with their animals in search of fodder and water. Okay, then the next characteristic. Okay, no, sorry beta. This type of movement arises in response to the climatic constant and terrain. Okay, now so this type of movement, okay, this type of movement depends on, okay, changing, this type of movement depend on changing climatic condition. Okay beta, so this type of movement depends on changing climatic conditions and terrain. Okay, so this type of, we can say this type of movement depends on changing climatic condition and terrain. यानी ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन चेंजिंग climatic conditions and terrain. अब climatic condition मतलब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड वाटर, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा मौसम बदलेगा. ठीक है, फॉडर की अवेलेबिलिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी. ओके, सो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश है तो वहां भारी बारिश भी समस्या है, तो उस टाइम पीरियड में, ठीक है, जो हर्ड्समैन है वो अपने एनिमल्स के साथ उन इलाकों में लेकर के चले जाएंगे जहां क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल कैसा होगा, थोड़ा सा कम. तो वो उनके पूर्वजों के एक्सपीरियंस से, है ना, हजारों सालों से देयर एक्सपीरियंस इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वो उनका एक फिक्स सिस्टम बन गया है. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन changing climatic conditions and terrains. Got it? Okay, so this type of farming, this type of farming, this type of farming is practiced, I am again repeating,
This type of farming is practiced in semi-arid regions. Okay, mostly. Now, this type of farming is practiced in semi-arid regions mostly. ठीक है, यानी ये जो नोमैडिक हर्डिंग की सिस्टम है, nomadic herding farming. Okay, so this nomadic herding farming is practiced in which region? It is being practiced in semi-arid regions mostly. Okay, तो जो nomadic herding है, nomadic herding farming, तो ये nomadic herding की जो farming है, वो mostly कहाँ पर है? Semi-arid regions. Okay, now which are the semi-arid regions? Sahara, then Central Asia and some part of India. Okay, India के कुछ हिस्सों में भी this nomadic herding is done. ठीक है, जैसे अभी जो हमारा आसपास का गढ़चंदूर के आसपास का इलाका है ना बेटा, तो गढ़चंदूर के आसपास के इलाके में जो ऊपर पहाड़ी रीजन है ना जीवती के आसपास का, यदि आपको कभी मौका मिले, ओके, विजिट अलोंग विद योर पेरेंट्स, यदि मौका मिले तो अपने पेरेंट्स के साथ यदि आप कभी वहां जाएं, ठीक है, तो वहां पर आपको इसी प्रकार के नोमैडिक हर्डर्स दिखाई देंगे. ओके, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस. ठीक है, मैंने खुद ने ये चीज एक्सपीरियंस किया है व्हेन आई हैव विजिटेड टू द मानिकगढ़ फोर्ट. ओके, सो आई टॉक्ड विद देम, मैंने उन लोगों से बात करी. Now they came from the Kutch region of Gujarat. They came from Kutch region of Gujarat. Okay, and when I talked to that person, so he explained me, he said, this is what our defined route, and we migrated from Gujarat around 100 years back. Okay, and now we settled in this area, but still we are going to Gujarat to meet our relatives. And we, that is around 50 to 100 families have been settled in this area. Likewise, their relatives, okay, the people belonging to their caste have been settled in different parts of Maharashtra, Madhya Pradesh. Okay, so wherever they got an opportunity to get the fodder and water, wherever they got the opportunity to get fodder and water for their animals, they have decided their particular area. Okay, so likewise in many parts of India, the herding communities are living. Okay, so what type of animals are commonly reared? Okay, so sheep, goat. Okay, the common animals which are reared are sheep, goat. Okay, then camel, yak, sometimes cows and buffaloes. Okay, so the animals like sheep, goat, camel, yak, sometimes cows and buffaloes. Okay, so कभी-कभी और क्या पाले जाते हैं? Cows और buffaloes. But mostly which animals are reared? Sheep, goat, camel and yak. Okay, now it again depend on community wise. Okay, for an example, if we talk about maybe the state of Jammu and Kashmir, okay, the state of Jammu and Kashmir has two herding communities, okay, Gujjar and Bakarwal. You will come across
in ninth standard about all these. Okay, so the two communities are there, Gujjar and Bakarwal. Okay, now in case of Gujjar and Bakarwal, the Gujjar community reared only sheep, whereas most of the Bakarwals are rearing goats. Okay, so again it depends on community wise. If the one community has a specialization for rearing one type of animal, so likewise the yak are also reared. Yak are also reared by some herding community in the state of Arunachal Pradesh, Sikkim, and Ladakh region of India. Okay. In case of some other areas, they are rearing cows and buffaloes. Okay. So the herding community which is living in and around this Jifti mountainous region, okay, hilly region that I talked earlier in this class. So I have found that they are having cows with them. Some of the families are also having buffaloes. Obviously, they have the camel, but the camel are reared for basically the transportation purposes. Okay, and few of them have sheep also. Okay, it means that the camel that they are using for the transportation purpose. Okay, got it? Cows and buffaloes, they do the rearing. Okay, they take out the milk, or maybe after taking out the milk, they prepare the various product and sell this product into market. Got it? And sheep. Well, sheep is mostly used for getting the wool, but it is also used for getting the meat. Okay, so that is what the nomadic herding. Okay, got it, friends? So that's all as far as concerned about the syllabus being given in our textbook. Now, what type of product the herdsman get from rearing these animals? Okay, so the animals provide milk, meat, wool, hides, and many other products to the herders and the herd families. Okay, so these products are being sold out in the market. So we can say this is their profession or business. Okay, so that's all as far as concerned about the topic nomadic herding. Okay. Now I am requesting all the students that all of you please go through the video of the live class once again. Okay, at least on daily or within 2 or 3 days. ठीक है, 1 या 2 दिन के बीच में, है ना, अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, so the same lesson is being saved in my YouTube account. So I am requesting कि एक बार आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देख लिया करेंगे. ओके, so you will get all the clarifications again. ठीक है? Is there any doubt, students? Okay. Now, so let us come on the next topic for today's, and that is commercial farming. Okay, now so if you could have seen the name commercial farming, okay, the name itself suggests that the farming is done. Name itself is suggesting that farming is done for commercial purpose. Now, farming is done for commercial purpose means it is to be done on a more large scale, and the main aim is not only to run the expenses of the family but to earn a huge income. Okay, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, है ना, राइट नाउ जैसे हमने किसकी बात करी, हर्डिंग की, है ना. So nomadic herders say what they rear, they are rearing cow, buffaloes. Okay, अब जंगल में रह रहे हैं, है
है ना, गाय भी पाल रहे हैं और भैंस वगैरह भी पाल रहे हैं, ठीक है। तो इधर से उधर घूम रहे हैं, घूमते घूमते अपना जीवन चल रहा है, जितना मिला खाया पिया चला, ठीक। इंस्टेड ऑफ दैट आप इसी प्रैक्टिस को रियरिंग ऑफ काउस, रियरिंग ऑफ काउ और बफेलो, ठीक है। इफ समवन हैज ओपन्ड द डेयरी इंडस्ट्री, किसी ने क्या ओपन किया, डेयरी इंडस्ट्री ओपन किया। तो ये जो हर्डर्स हैं, ये तो अपने एनिमल्स को, काउ और बफेलोस को जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से, दे कीप ऑन मूविंग, ओके, एंड व्हाटएवर दे गेट दे रिमेन सेटिस्फाइड एंड रन देयर फैमिलीज और एक्सपेंसेस। बट नाउ सेम रियरिंग ऑफ एनिमल इज बीइंग डन इन डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब वही एनिमल रियरिंग कहां हो रहा है, डेयरी इंडस्ट्री में, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे आर्या का पास है ना, तो हमारी आर्या दीदी ने क्या किया कि शी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके, ओजस्वी ओनली, okay, we can work out with Ojasvi, okay. So Ojasvi might have taken the loan from the bank and now she has opened the dairy industry, ठीक है। ओजस्वी ने क्या किया, डेयरी इंडस्ट्री ओपन करी, ठीक है। और मान लो ऊपर वही विलेज में 1 या 2 एकड़ जमीन खरीद के वहां पर एनिमल्स के लिए शेड बनाया, थोड़ी सी जमीन में, है ना बेटा, और बाकी की जमीन में एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो चारा उगा रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा पूरे अंबुजा को ऐसे कस्टमर बना लिया। गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट, अंबुजा में क्या बना लिए, कस्टमर्स बना लिए, ठीक। अब क्या हो रहा है, शी इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू अनदर पार्ट, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड शी इज गेटिंग द इनकम फ्रॉम रियरिंग द same animals, cows and buffaloes, large scale पे, and she is getting huge income also, ठीक है। so that is what the commercial farming. so commercial farming में कोई अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं है कि कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नया जानवर पालने की जरूरत नहीं है। only the commercial farming is what, वही फार्मिंग हो रही है which is being done in case of subsistence farming. फर्क कितना आ गया, here the aim for doing the job is not only for the survival but for earning the good income. commercial farming में भी वही काम होंगे, मुख्य तरीके से देखा जाए तो commercial farming में भी काम वही करना है जो किसमें हो रहा है, subsistence farming में हो रहा है, ठीक है। फर्क मात्र कितना है, फर्क ये है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वही काम सिर्फ फैमिली के सर्वाइवल के लिए है, ओनली उतनी ही इनकम आने वाली है। इन केस ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इनकम इज मोर। अब इनकम मोर है मतलब काम तो वही होगा, फर्क किसमें आएगा, काम करने के तरीके में, ओके। सो द वर्क वुड बी सेम, एग्रीकल्चर और रियरिंग द एनिमल, okay, but how the work is being done, what type of methods are adopted, this will certainly change, okay. What type of methods are being adopted, how it is being done, these things will be changed, okay. So in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market, okay. What happens in this, crops are grown and animals are reared, okay. So in this, crops are grown and animals are reared, okay, for sale in market,
ठीक है. So in this means in commercial farming. Okay, so in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Okay, so crops are grown is related to what? Agriculture. Animals are reared with what? Basically the dairy farming. Okay, or animal herding. But what is the major or main objective? The main objective is to sell it into market. And why to sell it into the market? To earn income. Okay, to earn income in terms of cash or money. And because of that, what happens? Certainly the work is same, that is doing agriculture or doing or rearing animal, but the entire characteristic, how to do, what to do is change. काम करने का तरीका बदल जाएगा. Okay, so for example in this case, if farmer is doing agriculture, then what happens? The area to be cultivated, the area to be cultivated, and again the area to be cultivated, and what? Okay, capital is large. यानी जब कमर्शियल फार्मिंग करेंगे, देन एरिया टू बी कल्टीवेटेड, कितने बड़े इलाके पर खेती कर रहे हैं. सो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी लार्ज होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली टू डू दैट व्हाट इज लार्ज? कैपिटल इज लार्ज. उतने काम को करने के लिए पूंजी या पैसा भी कैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है. देन second thing is, most of the work, okay, the second thing is most of the work is done by machines. ठीक है. So most of the work is done by machines. अधिकतर काम. Are you getting it? So in commercial farming, whatever the work is to be done, most of the work is being done by machines. Okay, so the commercial farming include what? The production of grain, that is the commercial grain farming. Sometimes it may be the mixed farming, okay, or the plantation agriculture. Okay, so what are the activities included in commercial farming? It is what? Commercial grain production. What is it? Commercial grain production. Okay, or it may be mixed farming. Okay, now beta, what is mixed farming? Mixed farming basically means land is used for growing food also, that is growing the crops, and some part of the land is used for growing fodder crops for rearing the animal. ओके, वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करेगा किसान? खेती करेगा तो अनाज भी उगाएगा, परंतु उसके पास जो पूरी जमीन अवेलेबल है, उस अवेलेबल जमीन में से कुछ हिस्सा छोड़ के रखेगा जिस पर फसल नहीं लगाएगा. उस हिस्से में वो इस प्रकार के फसल लगाएगा जो एनिमल्स के फॉडर के लिए काम करेगी. ठीक है. इन्हें जानवरों को खिलाने के लिए कौन सा वेजिटेशन उगाना है, वो वेजिटेशन को उसमें लगाएगा. गॉट इट? एंड
साइड बाय साइड डूइंग द एग्रीकल्चर, यानी खेती करने के साथ साथ वो और क्या करेगा, रियरिंग लाइव स्टॉक, पालतू जानवर भी पालेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट द मिक्स्ड फार्मिंग। सो कमर्शियल ग्रेन प्रोडक्शन, दैट इज in commercial farming which activities are there, commercial grain production, ठीक है, अनाज उगाना, गेहूं की लार्ज स्केल पर खेती कर रहे हैं। ओके, then large scale agriculture is to be done for getting more, maybe rearing rice, है ना, then mixed farming and certainly what plantation agriculture। Okay, now in case of plantation agriculture, okay, the regular crops are not grown। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है, रेगुलर क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी, बल्कि फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है, जैसे मान लो संतरे का बगीचा लगा लिया है ना, ऑरेंज का बगीचा है, लेमन का बगीचा है, ठीक है, मौसम्बी है, मे बी पोमग्रेनेट्स आर देयर, बनाना प्लांटेशंस आर देयर, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं बेटा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, तो द कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड व्हाट, कमर्शियल ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कमर्शियल फार्मिंग में सबसे पहले तो क्या आएगा, कमर्शियल ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रेन मतलब अनाज, तो खाने का अनाज इतने लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना कि it could be sold out in a market and the farmer will get huge income, ठीक है। Then mixed farming, now mixed farming means doing the agriculture, that is growing the crops also and side by side rearing some livestock or animals, okay। And plantation agriculture is what, growing those type of crops where it is not required to sowing the seeds again and again after every 3 month, 5 month और 6 month, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, जैसे हम बनाना प्लांटेशन की बात करें, तो बनाना प्लांटेशन में क्या है, एक बार बनाना ट्री लगा दिया, ठीक, अब ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद फिर से बीज लगाओगे, बनाना का पेड़ लगा दिया तो फॉर द नेक्स्ट 3 years, for the next 3 years the farmer can continuously get the output from the plantation। so इस टाइप की जो खेती होती है, that is known as what, plantation agriculture। okay, now in commercial grain farming crops are grown for commercial purpose। okay, in commercial grain farming crops are grown for commercial purpose। okay, so in commercial grain farming, I am writing it in short form। okay, so in commercial grain farming crops are grown for commercial purpose। okay, so in CGF, that is in commercial grain farming crops are grown for commercial purpose, ठीक है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होगा, crops are grown for commercial purpose। crops किसके लिए ग्रो करेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो करेंगे। got it? okay, what type of crops are there, wheat, rice and maize, okay, are grown
in different parts, okay, in different parts of the world. ठीक है, so what are the major crops? ठीक है, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. सागरी, बेटा you have given me 10. What do you want? Should I close the class now? Should I close the class or can I take for 5 minutes more? Okay. Well, so in commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. बेचना है बाजार में. कौन कौन सी 3 फसलें मेजर हैं? Wheat, rice and maize. Okay. The major areas, that is in which part of the world the commercial grain farming is practiced. Okay, so the major commercial grain farming areas are temperate grassland areas of North America, okay, Europe and Asia. These part of the world are sparsely populated. Sparsely मतलब इन हिस्सों में जहां पर क्या हो रहा है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. तो संसार के उन हिस्सों में the part of the world where commercial grain farming is practiced. I am again repeating, the part of the world where commercial grain farming is practiced, in those part of the world the population is less. आबादी कम है. So what happens? The farmers are owning the large farmland. किसानों के पास में बड़ी बड़ी खेती की जमीनें. Okay, so each of the farmer has a large farmland. So it is possible for the farmer to do the agriculture on a large scale. Okay, so that's all for today's class, students. Okay, because the next class is about to start in the same room. So we have covered a good portion today, and I hope that the network will support us and will complete our syllabus well in time. Okay, so we'll continue the topics in coming classes. Okay, thank you, students. Goodbye. Thanks.